एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, इस सेशन पे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ मेंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस विद वन एंड ओनली योर आंचल मैम, योर एजुकेटर ऑफ इंग्लिश, जिनके साथ मिलके आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं, इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, एसबीआई पीओ मेंस मिसलेनियस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आप लोगों को मुझे क्या करना है, अनअकैडमी पे जाना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और फॉलो बटन पे हिट करना है। और साथ ही अनअकैडमी पे मेरे नाम को टाइप करके मेरे प्रोफाइल पे फॉलो बटन हिट कर देना है। तो मेरे नाम को टाइप करने के लिए आपको टाइप करना होगा ANCHALSINGH। जी हाँ, दिस इज माय नेम। यू कैन जस्ट गो टाइप एंड हिट द फॉलो बटन। फॉलो बटन हिट करने से क्या होगा, यू विल बी एबल टू अवेल ऑल द फ्री क्लासेस, free live sessions, free PDFs, free recorded classes, free doubt clearing session, free practice sessions, free mock test. Everything will be there on this platform if you just go and follow me. And the moment you follow me, you can use my code AN live. If you also want to join my paid courses apart from the free classes. Now paid course में क्या होता है, how different is paid course? Paid course में you become more serious, you show more sincerity. वो कहते हैं ना कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे सिंसेरिटी बढ़ जाती है और सीरियसनेस बढ़ जाती है, चाहे वो पढ़ाई की बात करें हम या किसी भी चीज़ की बात करें। तो सिमिलरली जैसे ही आप यहाँ पे पढ़ाई करना शुरू करेंगे, आप एक रूटीन में आ जाएंगे। यू विल स्टार्ट डूइंग अ रूटीन स्टडी, यू विल बी ऑल्सो डूइंग रूटीन स्टडी तो आप करेंगे ही, साथ ही आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से आपको अपने स्टडी को, अपने स्ट्रक्चर को, अपने क्लासेस को, साथ ही अपने जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उनको कैसे स्केड्यूल करें, कैसे पढ़ाई करें, एक एक चीज को कवर करें और प्रैक्टिस रेगुलरली आपकी बनी रहेगी यहाँ पे। तो प्लस कोर्स और पेड क्लास ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। ज्वाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड विच इज AN लाइव, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइसेस हाइक हो चुके हैं, प्राइसेस बढ़ चुके हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। तो अगर आप बैंक एस्पिरेंट है या आप SSC एस्पिरेंट है, तो सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करने की जरूरत है, सबसे पहले आपको अपने गोल्स को सिलेक्ट करना है। अनअकैडमी प्लस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। अनअकैडमी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेली इंटरैक्टिव लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और PDFs मिलेंगे और लाइव टेस्ट एंड मॉक क्विजेस मिलेंगे, राइट। सो ये सब कुछ आपको अवेल हो जाएगा इफ यू जस्ट गो एंड बाय इट। सो देयर आर प्लान्स ऑफ 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months। यहाँ पे भी आपको सेम प्लान मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो विद अ प्लान ऑफ 6,500, जैसे ही आप 6,500 के प्लान को यूज करेंगे, क्लिक करेंगे, आपको पूछा जाएगा एक कोड, कोई कोड आपको पूछा जाएगा, उस कोड को आपको अप्लाई करना है। तो वहां पे आप यूज करेंगे मेरे कोड को विच इज AN लाइव। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोड आपको यूज करना है विच इज AN लाइव। जैसे ही आप मेरे कोड को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे रेफरल कोड में, आपकी ये जो फीस है 6,400 ये हो जाएगी, इसमें 6,500 में 650 रुपीज माइनस हो जाएगा विच इज 10%, राइट। एंड योर फीस विल बिकम 5,950 रुपीज। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना पे करना है 12 मंथ्स कोर्स के लिए, 5,950 रुपीज। ओके, बट मेरा कोड इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। Now this is my schedule. Please have a look on the schedule as well. 6:30 to 7 a.m. You can see me on YouTube channel Wi-Fi Study Studios. 10 a.m. to 11 a.m. Monday to Wednesday. Unacademy Plus की classes में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 11:30 to 1:30 p.m. आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं which is totally free for all। ये प्लस क्लासेस में आपको पेड करने की जरूरत होगी। साथ ही 10 to 11:30 मेरा एक सेशन शुरू हो चुका है SSC पे भी, जो कि प्लस SSC प्लस क्लासेस हैं हर सैटरडे को, उन स्टूडेंट्स के लिए जो वीकेंड क्लासेस कर नहीं सकते, वीकडेज क्लासेस नहीं कर सकते और उन्हें वीकेंड क्लासेस चाहिए। तो अगर आप SSC एस्पिरेंट है तो ये क्लासेस आपके लिए ही है डेफिनेटली। 11:30 to 1:30 p.m. आप स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। 2 p.m. to 3 p.m. वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स चैनल पे और 10:30 to 11 a.m.
थर्सडे और फ्राइडे को वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पे। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्वेश्चंस है। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है एज आई ऑलवेज से। तो मिसलेनियस क्वेश्चन डे 1 है आज हमारा, और आज के क्वेश्चन में, आज के सेशन में ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास जो हम सॉल्व करेंगे। तो जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। विजन इज यूजुअली डैश मोस्ट इफेक्टिवली when many different dash are used, full stop. Vision is usually most effectively when many different are used. So what will be the correct word to fill these blanks? Vision is usually developed most effectively when many different manifestations are used. Vision is usually adapted most effectively when many different organizations are used. Definitely organizations को तो use करेंगे नहीं. Vision is usually communicated most effectively when many different vehicles are used. Communication vehicle, no relation. Vision is usually exhibited most effectively when many different forms are used. Okay. Vision is usually described most effectively when many different thoughts are used. R लिखा हुआ है तो हमें कोई plural form, plural word ही use करना होगा. So definitely ये वाला option thoughts नहीं है, thought है, तो हम इसको use नहीं कर सकते. हमारे पास option बचा ये vehicles, कोई relation नहीं बन रहा है, नहीं use कर सकते. Organizations, manifestations, चलिए out of these three options A, B and D, which out of the following you think is the correct answer to the following question? आप comment box पे comment करके मुझे बता सकते हैं. AN Life code use कर सकते हैं 10% instant discount के लिए. तो join me in the plus courses as well as channel को like, share और subscribe भी करना है आपको, और session को ढेर सारा like करना है. Vision is usually dash most effectively when many different dash are used. What will be the correct answer of the following question? I would like to tell you the answer to the following question. The correct answer to the following question is option number D. Vision is usually exhibited most effectively when different forms are used. This is the correct answer of the following question. Next question. People who have been through difficult, painful, and not very successful, meaningful, reliable, strong, challenging change efforts often end up drawing both pessimistic and angry conclusions, projecting both pessimistic and angry conclusions, evolving both pessimistic and angry conclusions, following both pessimistic and angry conclusions, lamenting both pessimistic and angry conclusions. Which out of the following options is the correct answer to the following question? आपको बताना है correct answer to the following question. What should be the correct answer? Your time has already begun. जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. People who have been through difficult, painful and not very successful, meaning reliable, strong, challenging. तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि reliable, not very reliable change. Reliable change क्या होता है when we are talking about difficult and painful? Not very successful, meaningful, not very strong change, not very challenging change. Which out of the following options will be the correct answer? So according to me, the correct answer to the following question is option number A. People who have been through difficult, painful, and not very successful change efforts often end up drawing both pessimistic and angry conclusions. Next question. The human mind is never absolute, dynamic, perfect, stationary, happy. It advances or it diminishes, stops, disintegrates, retrogrades, or decomposes. Which out of the following option is the correct answer to question number 3? The human mind is never. Human mind absolute नहीं होगा, अगर बोलेंगे तो इसका मतलब complete नहीं है. Which out of the following options is the correct answer to this question?
The human mind is never what? Is never absolute, dynamic, perfect, stationary, or happy. The correct answer to the following question is option number D. The human mind is never stationary. It advances or it retrogrades. This is the correct answer of the following question. Next. If misery, if misery is the effect of ill fortune, it ought to be pitied if of virtue, calamity, virtue, vice, virtue. To be criticized, revered, protected, revered या revered. So very easy to identify क्योंकि यहाँ पे बहुत similarity है. So find the word which is the most common and that might turn out to be your answer. What will be the correct answer of the following question? The correct answer to the following question is option number. देखिए यहाँ पे virtue दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है. Revered 1 2 3. Common, protected, criticize नहीं है, calamity और vice नहीं है. So we are definitely going with these two options of virtue to be revered. This is the correct answer of the following question. Next. It would be impossible for us to continue living in this world if each of us follow, appreciate, design, visualize, knew exactly what fate had in plan, strategy, anticipation, hidden store for him. Which out of the following options is the correct answer to question number 5? Which out of the following option will be the correct answer? The correct answer would be option number E. This. It would be impossible for us to continue living in this world if each of us knew exactly what fate had in store for him. This is the correct answer of the following question. Next question. It is the parody, height, degree, level of selfishness for man who fully demand, appreciate, assimilate, appreciate, advance in their own case the great advantages of good education to deny these advantages to women. तो एक आंसर तो ऑलरेडी आपको मिल गया है कि these advantages लिखा हुआ है यानी डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव होने वाला है. पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे आपका आंसर बनाएंगे. So one thing you are completely aware of, we are talking about something right, something advantageous. So what will be the correct answer to the following question? It is the dash of selfishness. What of selfishness? क्या बोलते हैं selfishness की क्या है? Parody है, height है, degree है, level है. बहुत excess कोई चीज होता है तो बोलते हैं ना heights है, dude, it's heights. So according to me, the correct answer first blank is definitely height. अब second blank आपको choose करना है और बताना है what will be the correct answer. The correct answer here is it is the height. ये तो पता है. Next बताइए. Height of selfishness for man who fully appreciate in their own case the great advantage
of good education to deny these advantages to women. Next question. The learner should be encouraged, forced, directed, cautioned, encouraged to take a small first step, one that will provide immediate success and reinforce the learning, organize the learning, reorganize the learning, reinforce the learning. Yeah, acknowledge. कमेंट बॉक्स पे आप आंसर्स लिख सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने किया है पहले से। सेशन को भी आपको ढेर सारा लाइक करना है और मुझे अन अकेडमी पे फॉलो करना है ताकि आपको फ्री क्लासेस अवेल हो सकें। What should be the correct answer to the following question? The learner should be definitely किसी भी learner को आप क्या करेंगे? Encourage करेंगे। The learner should be encouraged to take small first step, one that will provide immediate success and reinforce the learning, right? The correct answer to the following question is option number A. Next question. His death brought, directed, delivered, invited, acknowledged more tributes than have been paid at the passing of any other human in history, helm of any other human in history, description of any other human in history, living of any other human in history, perpetuate of any other human in history. Very easy to identify. Tell me the correct answer to the following question. Very easy to identify. जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए what should be the correct answer of the following question given over here in this question. The correct answer definitely his death brought, है ना, उसकी डेथ से ट्रिब्यूट्स आए, brought more tributes than have been paid at the passing of any other human in history. This will be the correct answer of the following question. Next, only with executive position, development, contingent, commitment, satisfaction can the organization concentrate its energies on embarking, directing, fabricating, sustaining, molding competitive advantage over time. Which out of the following options will be the correct answer to this question? Question number 9, we are doing fillers, miscellaneous question. SBIPO means special. I hope you people will find this very, very beneficial to you. So, what according to you should be the answer here? Try to use each and every options given over here. Eliminate the options which you feel is definitely not going to be the answer. And think logically that what should be the correct blank, correct word for the blank.
ओनली विथ एग्जीक्यूटिव, किसी भी एग्जीक्यूटिव, किसी भी काम करने वाले के कमिटमेंट पे डिपेंड करता है, राइट? ओनली विथ एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट कैन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेंट्रेट इट्स एनर्जीज ऑन सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर टाइम, definitely about the people who work in the company. Next, all the performances of human art at which we look with praise or wonder are manifestations of the restless, projections of the restless, instances of the restless, proofs of the restless, visions of the restless, pronouncement of preservance, component of preservance, force of preservance, humanity of preservance, या future of preservance. Which out of the following options is the correct answer over here in this question? The correct answer to the following question is which out of the following options? Definitely the answer is option number C. हम जो भी परफॉर्मेंस ह्यूमन आर्ट के देखते हैं ये सारे क्या हैं? इंस्टांसेस ऑफ द रेस्टलेस, force of preservance. This is the correct answer of the following question. Next question. Okay, we have a paragraph which is completely a closed test. It's a closed test basically. Although John Wisdom's writing in philosophy show clearly the influence of Winston, they nevertheless also display a dash originality despite the dash and the difficulty of his style. A careful reading of Wisdom is seldom dash. He is unique kind of genius in philosophy. This essay is an excellent example of Wisdom's repeated attempts to dash the ultimate basis of philosophical perplexity. A great deal of time wisdom is dash interested in finding out why metaphysicians feel dash to utter such strange sentences like time is unreal. There are no material things, etc. According to wisdom, these such sentences are both false and perhaps meaningless and here. Dash, even more than Wittgenstein, wisdom has stressed the therapeutic conception of philosophy, a view that comes out clearly in this essay, where the emphasis that analogy between philosophical and neurotic distress dash them with other kinds of problems. The reader who is interested in gaining a fuller dash with wisdom's thought is referred to his famous article Gods in Philosophy and Psychoanalysis, Other Minds' most dash discussion of a single topic and in many ways his finest work. Let's see the exam options here. For question number 11, we have 5 options here. Although John Wisdom's writing in philosophy show clearly the influence of Wittgenstein, they nevertheless also display a dash originality, concise originality, visual originality, marked originality, limited originality, relative originality. What according to you should be the correct answer? जल्दी से comment box पे comment करिए और बताइए आंसर क्या होना चाहिए इस particular question का. The correct answer to the following question will be although John Wisdom's writing in philosophy show clearly the influence of Wittgenstein, they nevertheless also display a marked originality despite the despite the यानी कि definitely there's something wrong. Despite the dash and difficulty of his style, individuality, novelty, originality, complexity या creativity. Difficulty है तो difficulty का synonymous क्या होना चाहिए? Difficulty का synonymous यहाँ पे होगा option number D, which says complexity. Despite the complexity and difficulty of his style, a careful reading of wisdom is seldom dash. Okay, moving on to the next question. Okay, this was all about today's session. We shall continue this cloze test in the next series of miscellaneous questions. जो ना मत भूलिएगा इसको complete करना है और हमें complete answer बताना है यहाँ पे, right? So see you guys in the next class in the next session. Till then, take care. Goodbye. Have a good day. Do like, share, and subscribe the channel, and also like the session.